Here in Duki, in a small town near Quetta, Balochistan, the polio virus has claimed a victim. The young Saeed Karam, who is the latest victim of flaccid paralysis caused by the polio virus. دا بچه اول سر دا یخ تب وسو ماشام به سر پرسو دا بیو پشا کاری لکن دا ما سر یوڑل دا ڈاکٹر دا دا نا دی دوکی ڈاکٹر باری لیا دا اڈو والا ڈاکٹر نا دا دوکی کی اگر میں یوڑل بیا بیرت راویست دلی دا کچھ فرق نو بیا یوڑل دوره دا لوردائی میں یوڑل سادر ڈاکٹر لا با اکسرا میں وکل اکثر یو شی نو بیا رالم دا باری ډاکټر ده باری ډاکټر وکتل بیا نو دوه ډاکټر نور پولیو والا وغوښتل همیشه راځي دا عظیم دی یو بل مو دا عبدالک دی دا مو کور والا سړی دی راځي اچي مو اعتراض نسته دا کې همیشه بس دا الله کار وسو هو دا الله کار وسو ما دا وس وکړ کوټ مې یو لورلای دی وسو دا یو کار نه وسو همیشه راځي بس. According to the local health experts, this infection in the Viala Duki pocket came from a virus originating in the Lorelei district. Caused by missing routine immunization drives, Saeed Karam's case is but a great example of understanding why polio vaccination is often repeated periodically, and how children deprived of these essential cycles are susceptible to developing the infection. There have been few viruses that are as dangerous and frustratingly rigid as the poliomyelitis virus. The poliomyelitis virus was first discovered in 1908. The poliomyelitis virus is a parasite causing an infectious condition that attacks the nerve cells in the brain and the spinal cord. Spread through the oral fecal route, this virus can start with flu-like symptoms and tiredness, but among some people can cause serious symptoms such as meningitis, particularly paralysis, and can even cause death. The protection from the virus comes from 6 different types of polio vaccines. The polio vaccine immunizes the body by producing antibodies for the virus, which allows better defense in case of an actual infection. It also induces a local immune response in the lining of the intestinal walls, which is the area that the virus uses to multiply. The virus may be dangerous, but it is not invincible. As a matter of fact, it's been eradicated from almost all of the 125 countries that remained polio endemic until 1988, except for these 3 countries: Nigeria, Afghanistan, and Pakistan. Due to the effective vaccination drives against the polio virus around the world, the type 2 poliomyelitis virus is thought to have been eradicated since September 2015. And since November 2012, the type 3 has not been detected since the last reported case in Nigeria. This is the impact of polio vaccination drives. If enough people are vaccinated in a community, the virus will then be deprived of hosts which are susceptible to the infection, leading to crippling paralysis. Aware of the public health crisis in Afghanistan and Pakistan, His Royal Highness has also joined hands with the Bill and Melinda Gates Foundation in 2011 to initiate an equal partnership for the delivery of polio vaccine to the children in the region.
Considering the unique and difficult challenges in Pakistan, such a campaign was the need of the hour. The campaign was designed to work in close coordination with the district administration in the area of coverage, so that close monitoring and control can be carried out on the effectiveness of the security personnel. Security is the backbone of the Emirates Polio campaign, without which the execution of vaccination would not be possible. The security plan for the Emirates Polio campaign was prepared by the Pakistan Armed Forces and the Ministry of Interior to ensure strict security measures for polio workers across the country. This goes to show that the government of Pakistan has been involved at all levels and across various branches of its services to ensure the success of the Emirates Polio campaign. जब पोलियो के कैंपेन होते हैं तो DPCRs में DCs खुद या उनका ADC बैठ के टीम्स की डिप्लॉयमेंट को इंश्योर करता है टाइमली सिक्योरिटी कंसर्न्स हमारा जो पोलियो कंट्रोल रूम है दैट कंटेन्स डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द हेल्थ साइड द पुलिस द लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज all these blend together to make this program a successful campaign. The director of the UAE Pakistan Assistance Programme is personally invested in the Emirates Polio campaign to ensure that it is meeting its objectives. The director of the UAE Pakistan Assistance Programme, Abdullah Khalifa Saeed Al-Horfi, visited Gadab town in Karachi himself to show his commitment to eradicating the menacing polio virus from Pakistan. The Emirates Polio campaign was carried out according to the guidelines by the Government of Pakistan through the National Emergency Action Plan for Eradication of Polio 2013. The United Nations Children Fund for UNICEF and the World Health Organization are also key partners for the planning, implementation and monitoring of the Emirates Polio campaign. The key strategy to eradicate polio, which proved to be effective throughout 3 decades of polio eradication initiative globally, is to reaching each and every child with the vaccine, wherever they live, and despite any adverse condition or difficulties that in remote areas, in area with conflict, the program has to reach them. This is the main strategy to eradicate polio. It's not only through mass immunization campaign, because we also have what we call it routine immunization, although I like essential immunization, that we have to reach also and encourage people to vaccinate their children. With the areas we support the government, particularly in having high-level quality data. So in the 3 phases of the campaign, we provide data in terms of preparedness. We assess the preparedness of the campaign. In the implementation phase, where we have something called inter-campaign monitoring, where WHO staff, together with the government and other partners, go see the children have been vaccinated. And after the end of the campaign, we also help in monitoring the post-campaign, what was the campaign effectiveness. So that's one side. In addition to that, we support the government in having a very sensitive surveillance so that we detect polio cases wherever they are in this country. In addition to that, we have also a big research program saying what's the impact of all those interventions being done. So basically data collection, high quality data, and then that using the data for decision making at the highest level.
The expertise of these institutions enabled the Pakistan Department of Health to keep track of the vaccination data, as well as to monitor the results of the vaccination campaign. Investment in polio doesn't end by just stopping polio transmission. Because by investing in polio, we are building the capacity and building, training a lot of national on planning for mass public health intervention like mass immunization campaign, training many people on surveillance. Surveillance is extremely important. Pakistan have one of the strongest surveillance system for polio, and it is supported by a very advanced laboratory, one of the best in the world. Pakistan laboratory is one of the best. It's doing a lot of testing, is doing actually genomic sequencing, which is something like fingerprinting, to tell us absolutely, precisely the origin of the virus, from where the virus is coming. So all this will remain. All this will support health security in Pakistan. Since the start of the UAE Pakistan Assistance Programme, and with renewed security, the strength of the polio workers across Pakistan, especially female teams, has never been better. Polio workers such as Rani Andalib have been working for around 10 years in Haripur. She and thousands of other polio health workers across Pakistan are the foot soldiers in the battle against the polio virus. They go door to door to each family, sometimes more than one living in the same house, to ensure that no child is left behind, and then leave a mark to confirm that this household has been covered in the fight against polio. The first step to administering polio vaccine doses is to take the vaccine to the remote corners of the country, and which is also a challenge in the offshore Baba Island in Karachi. पूरी कराची का जो सीवरेज का पानी है ये पूरा इसी समुद्र में आ रहा है। ये समुद्र सारे जजीरे टच हैं इससे समुद्र से, और इसी UC4 को बाबा बिट को तवज्जो देना बहुत बड़ी अशद ज़रूरत है। यहाँ जो वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन होती है हमारे UCMO लेकर आते हैं, तो फिर हमारे UCMO THO से कलेक्ट करते हैं। THO से कलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन होती है। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम अलग अलग जजीरों के पास, हर सुपरवाइज़र के पास उनकी टारगेट के मुताबिक उनकी वैक्सीन उनको गिवन देते हैं। हमें मॉनिटरिंग करनी पड़ती है कि हमारी टीम किस तरह काम कर रही है, किस तरह मूव करती है, जो उसके टारगेट के हिसाब से वो काम कर रही है या नहीं कर रही है। पोलियो में ये होता है कि सुबह हमने 7 साढ़े 7 तक आना होता है। इसमें ये होता है कि हम जो हमारी टीम से पोलियो इनको हम वैक्सीन देते हैं, जो इनके साथ मार्कर चाक्स और ड्रॉपर वगैरह एरिया में देते हैं। फिर ये जब इनको हम दे देते हैं, फिर ये जो इनको एरिया दिया हुआ है उसमें जाती हैं। उसमें ये क्या करती हैं कि इनका शुरू से जो इनका स्टार्ट से जो घर होता है, घर उससे पहले घर से लेके एंड तक 135 घर या 140 जितने भी इनको दिए होते हैं, उनमें जाके पोलियो वैक्सीन देती हैं। जो बच्चे होते हैं 5 साल से कम वाले, उनको वैक्सीन देती हैं या रिफ्यूज़ल है वो कवर करती हैं। इसके बाद फिर हम इनके पीछे सुपरविजन करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, जो हम चेकिंग कर लेते हैं। इसके बाद ये जो LHW है, इनके पास जो NA आ जाते हैं, उनको उसी दिन कवर करती हैं। फिर हमें रिपोर्ट्स देती हैं, 2 बजे तक आती हैं ये हॉस्पिटल। These dedicated polio vaccination workers are convincing parents every day about the importance of vaccinating their children in time. However, the management of this army of polio workers requires a great deal of administrative effort. In all the districts where the Emirates Polio campaign was rolled out, district administration regularly attended the morning assembly to brief the field teams about their goals. मैं अप्रिशिएट करूंगा मेरी जो टीम है, जो बहुत ही मुश्किल हालात में एक एक खातून को, औरत को एक एक घर के पीछे एक एक फरलांग पैदल जाना पड़ता है, और उनको अप्रिशिएट करूंगा। वो वाकई मतलब इस प्रोग्राम की रीढ़ की हड्डी हैं। उनके बगैर प्रोग्राम की सक्सेस नहीं हो सकती।
Another important aspect of the Emirates Polio campaign is to eliminate the polio virus transmission due to the constantly mobile population of Afghan migrants and the internally displaced persons. This is why the campaign lays special attention to covering Afghan and IDP refugee camps across Pakistan. इस कैंप का नाम तो गमकोल है। इसमें सारे अफ़गान रिफ्यूजीज़ रहते हैं और इसमें एक बात और है कि इसमें IDPs रहते हैं। इस एजेंसियों के लोग भी इधर रहते हैं। इस कैंप के लोग जो है इसका तकरीबन ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान में निंगरहार और काबल से इस इलाकों के लोग हैं, यानी तकरीबन इधर 90% लोग जो है उस इलाकों के हैं जहाँ पर उधर कन्फर्म पोलियो केसेस है। नहीं, हाई रिस्क है ना। हाई रिस्क किसको कहते हैं? क्योंकि ये लोग अफ़गानिस्तान को आते जाते हैं, जिधर वहाँ पर जो पोलियो केसेस है इसी इलाकों के ये लोग हैं। और इसमें जो मुख्तलिफ एजेंसियों के लोग हैं वो भी आते जाते हैं अपने इलाकों में। तो ये बच्चे जब इधर जाते हैं और महीनों महीनों उधर ठहरते हैं तो लाजमी बात है कि उसको ख़तरा तो होता है ना। जो हमारे दूर दराज इलाके है उसके लिए हम आउटरीच के प्रोग्राम बनाते हैं, यानी हम उधर उसके इलाकों में जाकर उसके मस्जिदों में ऐलानात करते हैं, उसके हुजरों में बैठते हैं, उसको वैक्सीनेशन करते हैं। तो हमारी जो टीमें हैं वो इतना वेल ट्रेन है ना कि वो जिस घर में जाते हैं इधर पोलियो के हवाले से IPC के 9 सवालात होते हैं, वो हर घर में जाकर ये 9 सवालात करते हैं उससे कि आपका कोई बच्चा बीमार है, 40 दिन से कम बच्चा जो सोए हुए होते हैं, जो गैर से बाहर जाते हैं उसका बाकायदा एड्रेस लिखते हैं, कब आएगा वो वापसी का पता भी लिखते हैं। वो हर एक घर में बहुत काफ़ी टाइम लगाता है, जिसकी वजह से कोई बच्चा उसे रहता नहीं है। पूरी दुनिया में सिर्फ हम 2 मुल्क रह गए हैं, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। और स्पेशली फिर उसके बाद जो है हमारे पास, क्योंकि पॉपुलेशन का जितना बर्डन है, जितनी हमारे पास क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट होती है, तो जब तक ये 2 मुल्क हम पोलियो फ्री नहीं होते तो ना सिर्फ ये रीजन बल्कि पूरी दुनिया पोलियो एरेडिकेट नहीं कर सकती। The mobility of these refugees is not just limited to these camps. Over decades, the Afghan refugees have settled across Pakistan, particularly as far as Karachi. The threat of the reintroduction of the virus in Karachi always looms overhead because of the frequent incoming migrants from regions of Pakistan bordering Afghanistan. Karachi faced reintroduction of virus in 2017 and the team here has been working very hard to come to grips with this situation, and we have the potential to fight back, and the environmental surveillance system that we have established is now giving us very good results. A part of the polio eradication strategy is to ensure vaccination at entry and exit points, particularly in transport hubs, where there is a massive influx of people in and out of the cities. हर महीने यहाँ पे एक ट्रेन एक्टिविटी होती है, तो उसमें हमारे यहाँ के लड़के जो है ना वो कराची से हैदराबाद तक जाते और हैदराबाद से कराची तक वापस आते। तो उन दिनों में थोड़ी सी मुश्किल का सामना करना पड़ता है क्योंकि ये लोग ट्रेनों से जाते हैं। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि हमारे कुछ पोलियो वर्कर चलती चलती ट्रेन से गिर भी गए, ज़ख्मी हुए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बच गए। थोड़ी बहुत छोटे तो आई हुई थी लेकिन शुक्र है कि बच गए। तो ये हमारा एक मिशन है कि हम जो है ना अपने पाकिस्तान से जो है ना पोलियो का खात्मा कर रहे हैं। A diligent effort is needed not just in the refugee camps, but also in the outskirts and suburbs of large cities, where temporary settlements can prove to be a risk as well. जो मेरे पास इलाका है वो है नोमेडिक पॉपुलेशन है हमारी, यानी खाना बदोश रहते हैं यहाँ पर, और इन लोगों का जो है ज़्यादातर आना जाना जो है रहता है। और यहाँ पर पोलियो ड्रॉप्स पिलाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे आना जाना बहुत ज़्यादा होता है लोगों का, इसीलिए क्योंकि ये वायरस कहीं से भी कैरी होकर हमारे इलाके के अंदर या हमारे मुल्क के बच्चों को मुतासिर कर सकता है। तो इसलिए हम मेक श्योर करते हैं कि यहाँ का हर बच्चा आने वाला, चाहे वो मेहमान हो या यहाँ पर परमानेंट रह रहा हो या टेम्परेरी रह रहा हो, तो हम उनको वैक्सीनेट करते हैं।
हैं। मतलब हमें डेली बेसिस पर यहाँ पर आते हैं, विज़िट करते हैं हर घर को, और हर घर से पूछते हैं। अगर कोई न्यू फैमिली आई हुई होती है हम उसको रजिस्टर करते हैं। जो बच्चे हमें कैंपेन के दौरान नहीं मिल रहे होते, हम उनके पेरेंट्स वगैरह से या दादा दादी जो भी यहाँ पर होता है वो हमें इस हवाले से बताते हैं कि वो कब आएंगे, तो हम दोबारा फिर उनको विज़िट करते हैं, यहाँ पर उनको ड्रॉप्स पिला कर जाते हैं। यहाँ पर जब आते हैं तो हम इनसे सवालात करते हैं। हमारे जो काम है वो तकरीबन 10 क्वेश्चन पर बेस्ड होता है। हमारे पास जो डेटा हम एंट्री कर रहे होते हैं वो 10 सवालात पर मुश्तमिल होते हैं। वो 10 सवालात हम हर घर से कर रहे होते हैं, तो उससे हमारे पास एक्यूरेट डेटा जो है वो आ जाता है। जैसे हम पूछते हैं किसी घर से कि आपके घर में शादीशुदा जोड़े कितने, फिर उसके बाद हम उनकी एंट्री करते हैं। उसके बाद हम उनसे ये क्वेश्चन करते हैं कि आपके घर में 5 साल से छोटे बच्चे कितने हैं, फिर वो हमें वो बताते हैं। 5 साल के बच्चों का हम लोग रजिस्ट्रेशन ले रहे होते हैं, क्योंकि 5 साल के बच्चे हमारा टारगेट होते हैं। हर एक सवाल के पीछे हमारा एक बहुत बड़ा मकसद होता है। ये सवालात हम इसीलिए करते हैं ताकि हमें उस मकसद को हासिल कर सके और हमसे कोई बच्चा रह न जाए, और हमारी यही जिम्मेदारी है कि हम 2 पोलियो के कतरे हर बच्चे तक जो है वो पहुँचाएँ। The Emirates Polio campaign was implemented in 4 phases. Phase 1 was carried out in June to September 2015 in Khyber Pakhtunkhwa and the federally administered tribal areas, administering more than 13 million vaccination doses. Phase 2 was implemented over a period of 5 months in the first half of 2015 in Sindh, Balochistan, Khyber Pakhtunkhwa and federally administered tribal areas, administering more than 73 million vaccination doses. Phase 3 was implemented over a period of 9 months from March to December 2016, targeting more than 10.6 million children receiving 71.5 million doses. Phase 4 was implemented over a period of 8 months from February to May and from July to December 2017, targeting more than 12.6 million children receiving more than 61.6 million doses. The previously inaccessible areas covered by the Emirates Polio campaign workers with a stronger dosage than before has been one of the factors behind its effectiveness. This massive effort has resulted in delivering more than 219 million polio drops to around 12.6 million children each month during the campaign across Pakistan. Today, with the untiring efforts of polio workers across the nation, Pakistan is expecting its first year without polio transmission in decades. This could not have been possible without the hard work of polio workers, who have committed true to their passion despite all the hurdles in their way. They have been battling the harshest of terrains and the most testing of weather conditions. They have even been threatened with death. But they remain resolute in their mission all year round, in the remotest corners of the country. They are the foot soldiers of the battle against polio. With the continued cooperation from the United Arab Emirates, these field polio workers move in every town, every village, and every hut in the remotest of locations in the country covered under the Emirates Polio campaign.
They continue working day after day in the toughest of terrains. In rain and in snow. And under the scorching sun. They are continuing the fight against polio. And making a brighter, healthier future for our children. They are making a brighter, healthier future for Pakistan.